Hey students, a very good morning. So students, before our exam, we have already started chapter number 7, that is water and us. And we come to know that there are different uses of water, like for washing clothes, for gardening, for drinking, for bathing, for cleaning the utensils, for cooking, etc. Beside this, there are also many other uses of water. Okay, and we also come to know that water has no color, no smell, and no taste. Okay students, so in our earlier class we come to know that पानी का कोई कलर नहीं होता, स्मेल भी नहीं होता और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता. Okay, so this all has been already completed before your exam. So today we will start with the next topic, that is underground water. So what is underground water? Underground water का मतलब क्या होता है? Okay, अभी हम यही पढ़ेंगे. Okay students, so some water goes into the soil. So whenever there is rain, जब भी बारिश देती है तो some amount of water it always goes inside the soil. Okay, and that water is known as the underground water. Okay students, so अंडरग्राउंड वाटर हमें सॉइल के अंदर से मिलता है. फॉर दैट वी नीड टू डग डिफरेंट वेल्स एंड द ट्यूबवेल्स. सो इन ऑर्डर टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर वी नीड टू डग द वेल्स एंड द ट्यूबवेल्स. ओनली देन वी विल बी एबल टू टेक आउट द अंडरग्राउंड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, so hand pumps are also used to draw underground water. So I think आप लोग हैंड पम्प देखे हैं, वो हैंड पम्प से भी हम अंडरग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन डग द वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड द हैंड पम्प्स. So if we do all this thing, if we make use of all this thing, then we will get the underground water. So in many villages in India, people draw water from wells, tube wells and the hand pumps. Some people also use water from lakes, rivers and the streams. But water should be cleaned and purified before drinking. So students, यहाँ पे बोला है कि इंडिया में there are many people who draw water from the wells, tube wells and the hand pumps. मतलब इंडिया में ज़्यादातर पानी वेल से, ट्यूबवेल से और हैंडपम्प से निकाला जाता है. ओके, एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो यूज़ वाटर फ्रॉम द डिफरेंट लेक्स, रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स. सो हम लेक से या फिर रिवर से या स्ट्रीम से भी वाटर कलेक्ट करते हैं. एंड But while doing all these things, we should keep in mind that water should be cleaned and purified before drinking. Students, पानी कहीं का भी हो, लेकिन हमें पीने से पहले उसको ज़रूर क्लीन करना है और उसको प्यूरिफाई करना है, तभी हमें पीनी है. Okay? Then only we have to drink that water. Otherwise, it is not fit for us. Okay? Clean water. Dirty water has germs in it. These germs can cause diseases like the jaundice and the typhoid. So students, we all know that the dirty water, it has different kind of germs. And these germs can cause different diseases like the jaundice and the typhoid. इसका मतलब है कि जो गंदा पानी होता है उसमें बहुत सारा germs होता है और वो germs हमें बीमार कर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके की बीमारी हो सकती है, लाइक द जॉन्डिस एंड द टाइफॉइड. सो फॉर दैट वी शुड ऑलवेज कीप द वाटर इन ए क्लीन कंटेनर. ओके, सो हमें हमेशा पानी को एक अच्छे से कंटेनर में रखना है और उसका कवर प्रॉपरली बंद करनी है. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन if we do like that, then we will prevent the germs and the dust from entering into it. Okay? अगर हम अच्छे से बर्तन को ढक के रखें तो क्या होता है कि germs और dust उसमें घुस नहीं सकता. Okay? So that will be very helpful for us
in order to get prevented from the diseases. In the rainy season, the tap water sometimes become unfit to drink. So students, we know that in the rainy season, बरसात का मौसम में क्या होता है? Tap water, it becomes unfit to drink. Okay, so we should always drink clean water. When we find the water dirty, we should first clean it by boiling. Boiling kills the germs. We also clean water by using a water filter. So students, whenever we find the water dirty, firstly we have to boil it. Why? Because boiling kills the germs. Okay. So sometimes we also use water filter for filtering the water and making it very clean. So students, अगर पानी गंदा हो तो पहले उसको बॉईल करनी चाहिए, बिकॉज बॉईल करने से क्या होता है कि जो भी जर्म्स से पानी में वो सब मर जाते हैं. ओके, एंड बिसाइड बॉइलिंग के अलावा भी हम उसे फिल्टर करके पी सकते हैं. इन सम हाउसेस इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर्स आर यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर. दिस प्यूरिफायर्स आर कनेक्टेड टू दी टैप्स. सो स्टूडेंट्स, किसी किसी के घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर ऐसा वाला भी होता है. एंड दिस इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर दैट दे आर कनेक्टेड टू दी टैप्स. ओके, सो दिस वन इज अ बॉइलिंग वाटर, दिस इज अ वाटर फिल्टर एंड दिस वन इज अ इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर. ओके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द स्टोरिंग वाटर. सो हाउ टू स्टोर द वाटर. Most homes do not get water the whole day from the reservoirs. Even those people who get water from ponds, lakes, wells and the rivers need to store water. Some of the commonly used containers to store water are shown in the picture given below. So students, we all know that we do not get water the whole day. So for that we need to store the water. And the people who collect the water from the ponds, lakes and rivers, they also need to store the water. Okay, so for that different containers have been given. So you can see this one is a jug, a drum, a bottle, a bucket and a tank. So all these are the various containers that are used to store the water. So, do you know many cities and towns have developed near river? So, many cities and town has been developed near the river. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा cities और town ऐसे है जो कि river के एकदम सामने है. Okay? So, name the rivers near which the following cities developed. Use the word given in the help box. So, you have to see the river name and you have to name the city. Okay, so I will tell you, you just have to write. Okay, so the first one, Delhi, the river name will be Yamuna. Okay, so the second one, which is Kolkata, will be which one, which city? That will be Hooghly. The third one will be Ahmedabad, which will be Sabarmati. The fourth one, Vijayawada, will be Krishna. Okay students, so I think it's clear to you. First one will be your Yamuna. Second one, that is Kolkata, will be this one, Hooghly river. Third one, which is Ahmedabad, will be Sabarmati. Fourth one, Vijayawada, will be Krishna. Okay students, so thank you, and that's all for today. You just write it in your book with a pencil. So students, that's all. You just try to do the tick the correct answer, and yeah, if any doubt you can ask me. Okay, thank you and have a good day.